Okay, so today we are starting with our new lesson, differentiation. But before that, we will see what is differentiation. Differentiation होता क्या है? So if there is any function, see this is a function f of x. This is a function, इसको function बोलते हैं. And this function, if it is like this, 2x square, like this function, ये कोई function है. तो what you want differentiation. So differentiation means what? You have to differentiate this function. Means this function you have to differentiate. Differentiate means समझो this is a line like this going. You want to differentiate this line. From this point, this line is starting. So this line I want to differentiate. So what will be that differentiation? That line will cut into small parts. Small parts. This small part, this big, small, like these parts. Small parts, that line will get cut. Same way, differentiation means what? Cutting this into smaller part. If I take x equal to 0, or say x equal to, here I will take 3. Okay? Random number I have taken 3. X equal to 3. Then what will happen? So 2 and this x I wrote 3 square. 3 ka 2 and 3 ka square is how much? 9. It means 2 9s are 18. I got 18 here. Function is, answer is 18. Okay. If I take derivative of this, a derivative will be like this, f dash of x, or you can write like this. This f dash of x is derivative. इसका derivative बोलते हैं. F dash, it is denoted. So f dash of x derivative will be these two number is constant, and this x square का ये 2 नीचे आएगा और x से एक छोटी पावर, 1 less than this, 2 से एक कम, means how much? 1 this much only. So 2 and 2, this is 4 multiplication. This is x. And I have said this one. So put this here. Okay. So this one will be 4 and x is 3. So this is 12. And a shorter number. So this was your bigger function. Value was also big. Value is how much here? 18. And that one, it is having value 12. So this you are having lesser value. It means differentiate what it does, तो ये function को छोटा बनाता है. What differentiation के characteristics of differentiation, मतलब differentiation की quality, खासियत, what is that? तो it makes reduced function into smaller. So you can denote like this. Otherwise ये जो function है, I can write like this, y is equal to 2x square, like this. And then differentiation I can write like this, dy by dx means differentiation of y with respect to x. Okay, we read like this, differentiation of y with respect to x, dy by dx. Okay, and this dy by dx is like this, 2 into this 2x, this one नीचे आया. And different function have different differentiation. ये एक simple वाला function है, algebraic function. Like this, I can take any trigonometric function, or I can take like this log function, like this, or you can take any constant k. But always remember, constant ka when you take derivative, it is always 0. Okay. Differentiation is always 0. तो ये जो है differentiation of any constant number, that is coming 0. Same way, you know कि differentiation of this is coming this much. तो you denote this y, fx को f dash you denoted. Same way, if you want to denote y differentiation, I can denote this as y dash also. Okay. But
in normally we use this because this is easy to represent. So we use this one. If you want, you can use f dash also. Somewhere we use f dash, somewhere we use dy by dx. But mostly in this chapter we will use dy by dx. Why? Because this is easy and convenient to use. So everywhere it is being used, this one. Okay. So till here यहाँ तक समझ में आया? तो if you want take screenshot of this, then we will move to next one. Now see, if this x is any number, any variable, so this variable, just one second. This variable is having some function. Okay, कुछ function है. Is this variable x is having some function, this function. Okay, and this function x का function है. x से एक h है. h something constant है. Means I have increased x. x की value थोड़ी सी increase की. ये समझो तुम्हारे नंबर लाइन है. ओके, दिस इज योर नंबर लाइन. हियर समवेयर इट इज x. तो x से थोड़ा आगे, नॉट नेक्स्ट वन, x+1 नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे कहीं पे देखिए थोड़ा सा इंक्रीमेंट. हियर इट इज x+h. हियर ये इधर नहीं आया, नेक्स्ट वाला डायरेक्ट इधर नहीं आया, लिटिल बिट इंक्रीमेंट. दैट इज x. h is what? h is your small increment. Okay, अब ये small increment है. तो x is having function, तो it means x+h भी कोई function निकलेगा. तो it means f of x plus h will also exist. Okay, now what you do, you want to differentiate करना है. तो first you what you do, तो bigger number minus smaller number, like this is bigger function minus smaller function, this one, and then divide by this smaller increment, small increments divide, and then what you do, whatever answer come उसको limit करना, limit as h tends to 0, limit लगाओ, and this whole will become your formula for derivative of f with respect to x. Means if this limit exists, then it is called derivative of f with derivative of f with respect to x. So, and this one, whatever we done, this principle or this concept is first principle of derivative. Okay, first principle of derivative, this one, and then you have this denoted as like this, f dash of x, like this. Okay, so ये तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल है डेरिवेटिव का. दिस इज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. अब डेरिवेटिव, वेरेवर यू हैव दिस डेरिवेटिव मीन्स व्हाट, एक फंक्शन दिया होगा और उसको सिर्फ डिफरेंशिएट करना. मीन्स इन होल योर दिस वन डिफरेंशिएशन लेसन यू हैव ओनली लाइक दिस क्वेश्चन, differentiate with respect to x. Okay, पूरे के पूरे chapter you have this kind of question. Everywhere you can see this kind of question is there. Not all, but mostly everywhere this kind of question is used in this lesson. Differentiate with respect to x, and whatever answer, whatever questions you have, small questions 1, 2, 3, that we have to solve. How you have to solve? Only differentiate करना है. So derivative, you have some formula for that. This you have some standard functions. जैसे for example, I'll give here एक table देती हूँ. Just take down this table, okay? Here you will have function, and here you will have derivative.
or you can say like this, dy by dx, or you can say f dash of x. So this first one, I will take any constant number. Constant का डेरिवेटिव व्हाट इज दैट? आई हैव टोल्ड कांस्टेंट नंबर है तो नंबर को डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? तो इट इज ऑलवेज 0. ओके, I'll write in bracket always. Then x, if it is only x को पावर नहीं है, कुछ नहीं, रूट नहीं, पावर नहीं, एनीथिंग, तो x सिंपल x है, या फिर जो भी वेरिएबल है. आई हैव टेकन x इज अ स्टैंडर्ड वेरिएबल, एवरीवेयर यू यूज x. तो x का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 1. देन इफ x इज हैविंग एनी पावर, x raised to n, तो इसका डेरिवेटिव विल बी दिस n, इट विल गो साइड एंड x को पावर आएंगी एक कम, मीन्स लाइक दिस, n इंटू x raised to n माइनस 1. n साइड में आया एंड इट x का पावर है, इट विल बी लेस देन n, एक लेस देन 1 n. फिर सेम वे नाउ वी विल टेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये तो हो गया अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. Trigonometric function, I'll take first sin x. Okay, and sin x is इसका derivative is always cos x. Okay, derivative. Then if it is cos x, then cos x का derivative is minus sin x. This you remember, minus sin either. Then if you have tan x, तो tan x का derivative you have sec square x, sec function. फिर you have cot x. I think you have studied this trigonometric function in 10th and 11th also. तो ये trigonometric functions याद रखना, ये sin, cos, tan, cot, sec, cosec. Cot x का derivative you have minus cosec square x. Okay. And then you have sec x. Sec x का डेरिवेटिव you have sec x into tan x. Okay. Then you have cosec x. What is remaining here? Cosec x. तो cosec x you have डेरिवेटिव cosec x का minus cosec x into cot x. जरा ध्यान से देखो इधर, कॉट, कोसेक एंड कॉस 3. तो ये याद कैसे रखने का कि माइनस साइन किधर है, तो विच एवर इज स्टार्टिंग विथ सी उसको माइनस साइन है, ऐसे याद रखो. सी दिस वन इज हैविंग माइनस साइन कॉस, इट इज स्टार्टिंग विथ सी, इसको माइनस साइन है. इट इज स्टार्टिंग विथ सी, इसको माइनस साइन. इट इज स्टार्टिंग विथ सी, माइनस साइन. दिस डेरिवेटिव टेक ए स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, देन वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट फॉर्मूले. ये फॉर्मूले यू हैव टू टेक डाउन इन योर बुक. नाउ you have next function, that is this function e raised to x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. मतलब e raised to any power, तो e को कोई भी raised to power होगा, तो that is called exponential function. And e is what? Your exponential constant. e is having some value, it is exponential constant. And from e raised to x का derivative is always e raised to x. Okay, e raised to x कभी नहीं change होता. Then if it is a raised to x and a is any number, a is any number, तो a raised to x का डेरिवेटिव you will have like this, a raised to x and log a. this a का log a क्या रहता है? वो your logarithmic book, in log book you see, तो same thing you have to use here. कोई तो एक log होगा, log निकालें. Okay, then see this a raised to x, you have it is having a number, so a raised to x into log a. And then sine inverse function.
inverse function. Inverse function what you have? 1 upon under root 1 minus x square, this one, and provided that x mod x is less than 1. Mod x should be less than 1. So less than 1 means minus nahi. It should be something decimal. So this like this it will come. And same way for cos inverse. We are going to inverse trigonometric function. So cos ka inverse x, this will have minus of 1 upon 1 minus x square. Same way, this mod of x, value of x will be always less than 1. Mod means mod के अंदर x पॉजिटिव होता है, always it is positive, even if that x is negative number, mod के अंदर जाने के बाद it will be positive. Cos inverse and sin inverse same derivative, only sign change. Same way you have tan inverse. So tan inverse x you have 1 upon 1 plus x square. This is your derivative for tan inverse x. And cot inverse x, minus 1 upon 1 plus x square. Only sign change. Everything is different, same. Why? Because tan and cot में कितने का डिग्री का डिफरेंस होता है? 90 डिग्री का. साइन और कॉस में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है. मतलब if sin function I change with 90 degree, cos पे जाता है. Same way tan if I change with 90 degree, cot पे जाता है. Okay, tan angle, tan का angle if I change with 90 degree, cot पे जाता है. वैसे sin का angle if I change with 90 degree, cos पे जाता है. या उसको प्लस 90 डिग्री करो या माइनस 90 डिग्री करो, that doesn't matter. Then this one finish. Then same with sec inverse x. Sec is 1 upon x root x square minus 1. और इसका जो mod x है, it will always be greater than 1. This should be always greater than 1. नहीं तो इधर denominator will be 0. Everything will get not defined. Function is always well defined. तो ये जो है, this one should be greater than 1 strictly. Then cosec inverse x. Cosec inverse x, same thing, only minus sign is added. X square minus 1. And same condition, mod x should be greater than 1. नहीं तो ये पूरे का पूरा फंक्शन अगर इधर समझो 1 आया गलती से, तो this function will get 0 and it is not defined. Function is defining it. Then one more it is left is your favorite one, log x. Log x का डेरिवेटिव just 1 upon x. इतना याद रखना. Any log x, इसका डेरिवेटिव is always 1 upon x. तो if you want, I'll take little ऊपर. Take screenshot of this, then we will move forward. Okay, take screenshot, then we will move forward. Now here we have put one more condition कि समझो in derivative there is function of x and इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ this one and function of x is having some algebra ऊपर, तो फंक्शन को फंक्शन लगाया हुआ है anything. तो this derivative it will be like this. For example, derivative with respect to x, this one, f of x raised to n. फंक्शन कुछ पावर है पूरे के पूरे फंक्शन को, तो it will be like this, n into f x raised to n minus 1 and again अंदर वाले का डेरिवेटिव f dash of x, this one. Okay, like this. Then if it is sine, means d by dx, it is like this, sine of fx. Then it will be cos of fx and again this f dash of x, means again is बेचारे का डेरिवेटिव. Okay, same way. Then third question, your third one. तो
this one dy dx of inverse function sin inverse of f of x ऐसे अगर लिया तो इनवर्स फंक्शन का क्या होगा 1 अपॉन यहाँ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर वापस f का डेरिवेटिव। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ये फंक्शन बहुत हो रहा है। I'll take one example and then you will understand. Okay, this is one example. Sine of x cube. Okay, sine of x cube you have means sine function का sine है. ये x cube is any function and उसका sine. This is and what you want कि this solution consider as y. Y consider करो for your convenience. Okay, this one. Then take derivative of this. Take dy by dx of this dy by dx of sin x क्यूब का इसका डेरिवेटिव लेना है। तो व्हाट यू नो साइन का डेरिवेटिव यूजिंग फॉर्मूला dy by dx का sin x व्हाट you have cos x, तो दिस विल बी cos ऑफ दिस x क्यूब और ये दिस x क्यूब अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट। अभी x क्यूब का डेरिवेटिव व्हाट यू हैव 2x स्क्वायर मीन्स x क्यूब का 3 साइड में आ गया और x के ऊपर जो पावर है दैट पावर विल बी 1 लेस देन, इससे थोड़ा सा एक कम। हियर दिस इज योर सो दिस आई विल अरेंज प्रॉपरली एंड राइट हियर कांस्टेंट नंबर बाहर, देन cos ऑफ x स्क्वायर इधर लिखते हैं x स्क्वायर cos ऑफ x क्यूब। ओके, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? सेम वे इफ आई टेक वन मोर फंक्शन, आई विल टेक दिस वन फंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट वन। इफ आई टेक सेकेंड वन फंक्शन log ऑफ, नाउ इफ वी टेक दिस वन, अगर समझो ये log का एक फंक्शन लिया, ये तो यू अंडरस्टूड हाउ टू डू। तो नेक्स्ट विल सी दिस, समझो लाइक दिस log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन्स दिस इज अल्जेब्रिक फंक्शन, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देन वो फंक्शन का वापस log लिया। मतलब पहले अल्जेब्रिक फंक्शन था उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया, उसका लॉगरिथमिक फंक्शन लिया। ओके, नाउ यू हैव टू टेक डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो कंसिडर दिस एज y is equal to log of sine of x square plus 1. Okay, now what you have ki differentiation. I'll write here differentiating with respect to x. Okay, WRT लिखा है with respect to x and dy by dx तो फर्स्ट यू टेक, बाहर कौन है log है, तो फर्स्ट यू विल टेक log का फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट यू विल टेक log का फंक्शन कैसे, तो log ऑफ वट एवर इज दिस, log ऑफ दैट ऑलवेज विल बी 1 अपॉन वट एवर, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अगेन अभी क्या है, साइन है, साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos ऑफ वट एवर इज देयर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ cos ऑफ दिस, ओके फिनिश्ड। नाउ इसका फंक्शन साइन का हो गया डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव होगा साइन, साइन ऑल्सो डेरिवेटिव इज फिनिश्ड। देन नाउ वी हैव टू टेक दिस वन डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस डेरिवेटिव, देन what you have, इसका साइन का डेरिवेटिव you have cos x square plus 1 and this x square plus 1 you have 2x and plus 1 is what, constant number, तो constant number का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 होता है। now whatever I have written this I will write properly अच्छे से कंबाइन करके लिखेंगे, तो it will be like this cos of x square plus 1 न्यूमरेटर में and this is 2x here, then sine of this x square plus 1. You want, if you want, you can write like this also. Otherwise,
Otherwise what you do is you shift this to x you shift this side, so that is also okay, or this one is also okay. Okay, as you wish. See, I am writing this shifting 2x that side. See now, this 2x I have shifted here. So ये हो गया हमारा this answer. Okay, if you want take screenshot of this. Okay, it's for today we will stop here only. Till here we have studied के basic differentiation का basic and 1 or 2 examples and formula. Differentiation के formula, differentiation का example and how to differentiate if any function it is given, how to differentiate. This much we have studied. Next we will study in next part. So okay, till here understood? If any doubt you can ask me, no problem. So till here we will stop.